टू रीड हब आज हम देखा ओपीएससी अंडर नोटिफिकेशन आसी रिक्रुटमेंट द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स ओके प्रोफेसर्स मान पोस्ट आसी ग्रुप ए सर्विस जोटा कि लेवल 14 पे स्केल रोचे ओके इन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सारंग पाराला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज बरहमपुर एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केउंझर अंडर स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ओके अपना फॉर्म स्टार्ट हम 18/3/2024 रु 18/4/2024 माने 18 मार्च आप पकड़े फॉर्म अप टू 18 एप्रिल जाए बुझेल ये रही 17टी पोस्ट रोटाल प्रोफेसर मानी ओके 7टी डिफरेंट डिसिप्लिन अंडर ग्रुप ए सर्विस जोटा है कौन लेवल 14 है सैलरी पे मैट्रिक्स माने एंट्री पी है पे है 1,44,200 ओके विथ डीए एंड अदर अलाउंसेस वैकेंसी रहा सिविल इंजीनियरिंग टोटाल 2टी अच्छी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मान 4टी अच्छी जो थी गोटे है ओमेन मान मेकानिकल इंजीनियर मान 7टी अच्छी जो थी ओमेन मान 2टी मेटालॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियर गोटे अच्छी प्रोडक्शन इंजीनियर गोटे अच्छी मैथ्स गोटे माइनिंग इंजीनियर गोटे टोटाल 17टी जो थी 3टी है ओमेन मान रिजर्व रही ओके आप मिनिमम एज होता है 21 मैक्सिमम एज पे नो लिमिट ओके आप 18/4/2024 को आप रेफरेंस हिसाब से नहीं पारे कौन कैलकुलेशन हम एज पे ओके एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2टी हिसाब से लिखाई गोटे फॉर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आ गोटे है फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटी एज पर यूजीसी नोटिफिकेशन ओके ये आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाई PhD degree in relevant field and first class or equivalent and either bachelor degrees or master level in the relevant branch and minimum 10 years of experience in teaching or research or industry out of which at least 3 years shall be at a post equivalent to the an associate of professor of level 13A 1 okay जोटा कि entry पे लगे 1,31,400 and at least 6 research publication at the level of associate professor in SCI journal or UGC or AICT approved list of journal at least 2 successful PhD guide as supervisor or co-supervisor or at least 10 research publication at the level of associate professor in SCI journal or UGC or AICT approved list of journal and at least a total research score of 120 on the last day of application okay अपन हिसाब से अपन क्वालिफिकेशन चेक करके फॉर्म पकेबे ओके आउ सेमती साइंस ह्यूमैनिटी मान सेमती अच्छी ओके देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन इधर लिखा है वी शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:4 बेस्ड ऑन द रिसर्च स्कोर ओके आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च पेपर जो थी 40 मार्क मिल डोमेन नॉलेज 20 टीचिंग एबिलिटी 20 एटीट्यूड कंट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट वेलफेयर इंस्टीट्यूट वेलफेयर एंड इनोवेशन इंटरव्यू परफॉर्मेंस ये 20 टोटाल 100 ओके द थ्रेशोल्ड ऑफ क्वालिफाइंग वुड बी 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड एग्जामिनेशन फी आम जाने ओडिशा गवर्नमेंट बर्तमान जेकोसी ओपीएससी ओडब्ल्यूएससी ओट्रिपलएससी एग्जामिनेशन फी 0 ओके ये अदर ये आई थिंक आप किसी नथियो आपण डॉक्यूमेंट आप रखि थे सब लिखा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपनकर ओके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन दरकार तेणु या रखि थे एनओसी मध्य जो मैंने चाकरी रखिए आई थिंक दैट्स इट फिर भी चेक करेंगे आउ थे कही दूसरी 18 तारीख मार्च आप फॉर्म फिलअप करेंगे अप टू 18 एप्रिल जाए ये आपंकर मेथडोलॉजी फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक रिसर्च कोड ओके आप पब्लिश आप जो हिसाब से पब्लिश करेंगे से हिसाब से आपंकर पर पेपर हिसाब से मार्क आस ओके काउंट करने आपंकर स्केल देखते ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू।
Have a nice day.